Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from the CA Sansar. Today we are going to talk about very interesting topic which is very much important. The topic is IDFC fraud. For that we having the CA Vivek Khurana sir. First of all, thank you so much, sir, to joining us and also giving your valuable time. In this topic, we will learn about the recent development around IDFC. Remind us of one thing: strong system matter, but strong oversight matter more. For that, Vivek Khurana sir will be explaining the very easy topic and also in very easy way. So, like sir, I would like to invite you to share your thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella, and the whole team CA Sansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on very important topic. So regarding you said it's not an easy topic. It's very tough. Fraud is never an easy task. It's always a tough task because IDFC itself said it's a fraud in its branch, Chandigarh branch, around 590 crore. Let me first show you the letter which they sent to the different exchanges. Just one moment. Yeah, this is the letter which they have sent to the different exchanges on 21st. It's on the 21st Feb 2026. They have sent it to the NSC and the BSC regarding the fraud in its branch, Chandigarh branch, regarding approximately 590 crore rupees fraud. And one important thing, first see the letter, then we'll let you know what they have written. Like it's just, I think you can check it from here. Yeah, this is, yeah, it's visible. Then see the slide 2. This is the letter they have sent to the NSC and the BSC, because IDFC is the bank and also a listed company, and whatever happens, it's duty to send it to the stock exchanges itself. And they send letter to the NSC and the BSC regarding the 590 crore rupees fraud in its Chandigarh branch. And this is how it's triggered. It's triggered when the Department of Haryana, जो इसमें it's the account of the Haryana government and different like Panchayat and other the accounts was there, when they asked them to please close our account due to some mismatch or some other issues, and transfer the amount to in other branch. Then the people come to know that the what the Department of Government, Haryana government, Department of Panchayat and others, what they are asking the amount and the what the actual amount is totally different. And then when they checked it, then they found it कि internal जो staff थे 4 people, they did the fraud. So let me explain you one by one, and what would be the impact. And as a chartered accountant and as an auditor, what's our duty? Because now bank branch statute audit is coming, and as a statute auditor, what's our duty to check? Because from April onward, 1st April से बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टार्ट हो जाएंगे, and maximum chartered accountants are busy in the bank branch statutory audit. And now what they have to check, because it's a lesson for all of us. This case is the classical example of the internal collusion. How this internal collusion? Because they bypass automated results, what automated alerts. Because you know, it's not like nowadays what cyber crimes are dating, like someone hacked the account. No, it's the old system. जो आप जैसे फ्रोज चेक्स को आपने फ्रोज कर लिया, इट्स ऑन द सेम वे. ये नहीं है कि आजकल जो चल रहे हैं कि आपने हैक कर लिया अकाउंट और अमाउंट ट्रांसफर कर लिया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स बाय द इंटरनल कोल्यूजन. एंड हाउ दे डिड मीन्स आई एम सरप्राइज. मीन्स दे हैव बाईपास जो भी अलर्ट्स हैं, आइदर ऑन द मेल और ऑन द एसएमएस पे भी अलर्ट्स आते हैं. दे हैव बाईपास मीन्स totally manipulation at the branch level. And how they did?
Like I already told, it's not like that. The modern cyber crime system, modern system is not like, it's just like the जो आजकल आपका चेक बेस्ड ट्रांजैक्शन है, सीटीएस, सीबीएस में सीटीएस है, उसमें फ्रॉड किया है. एंड means they were giving different statement to the Haryana government officials, and the amount was the different. Means see, means how they did, means approximately 590 crores, 5490 plus 100 other thing, means shadow balance ledger जो आप पार्टी को दे रहे हो, in that statement it's this different amount, and what's the actual is, it's the different amount. And they have not followed the master checker process. Remember, as a auditor, you people are doing in the Ghosh Jalani. Now you will think, कि what's the importance of the Ghosh Jalani. In that, they will ask whether the master means master checker process. Make sorry, I'm saying master maker checker process. कि means किसने चेक बनाया एंड किसने उसको चेक किया, किसने ऑथराइज किया, वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट. यहाँ पे उसकी टोटली ओनली फ्यू पीपल्स, इंटरनल स्टाफ ओनली 4 पीपल. मोस्टली ब्रांचेस में आपको क्या मिलेगा, 4 5 6 लोग, इससे ज्यादा नहीं मिलते आपको. एंड ऑल आर इन्वॉल्व, एंड दे डिड दिस फ्रॉड विद द हरियाणा गवर्नमेंट, उनके अकाउंट्स के साथ टोटली मींस फ्रॉड करके एंड चेक फ्रॉड करके दे हैव ट्रांसफर्ड. जो इनके सीईओ हैं बैंक के, आईडीएफसी बैंक के, मिस्टर वी वैद्यनाथन, दे सेड कि माइट बी थर्ड पार्टीज आल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ अमाउंट इट्स इनटू डिफरेंट बैंक्स, अदर बैंक्स, जो अदर बैंक्स हैं, दैट कैन बी विद द स्टाफ अकाउंट, आर देयर रिलेटिव, आर देयर फ्रेंड्स, वट एवर इट मे बी. एंड दे सेड बैंक हैज ट्राइड टू रिकवर दैट अमाउंट, बिकॉज उन्होंने अनदर बैंक से रिक्वेस्ट की है टू लीन मार्क एंड ट्रांसफर इट टू, इफ देयर, इफ बैलेंस इज देयर. अगर उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया हो, ऑलरेडी विड्रॉ कर लियो बिटकॉइन और वट एवर इट मे बी, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल. जो सीटीएस सिस्टम है, सीटीएस सिस्टम जो चेक ट्रांजेक्शन आपका सिस्टम है, उसको इन्होंने टोटली चेंज कर दिया. मीन्स ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल एंट्रीज. तो दिस इज 590 करोड़. सो एज एन ऑडिटर, as an auditor, means when we are going to do the bank branch audit, as an auditor, what's our duty, what to check? The first thing from this, I'm not talking about all bank branch audit, from this fraud, what lesson as a chartered accountant and as an auditor, what we can do while doing the bank branch audit? First is you have to check the master data audit trail. कि अगर कोई किसी क्लाइंट का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी विद इन 48 आवर्स कोई आपने चेंज करी है, कोई आप उसको, यू हैव टू चेक कि वेदर इन दैट अकाउंट एनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इज देयर, तो देन यू शुड बी केयरफुली. तो ऑडिट ट्रेल मैं हमेशा कहता हूं, विद यू मस्ट गो विद द ऑडिट ट्रेल. कि किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, कोई उसमें हाई वैल्यू डेबिट हो रहा है उसके अकाउंट्स में, तो यू हैव टू चेक विद इन 48 आवर्स वेदर दे हैव चेंज द मोबाइल नंबर और द ईमेल आईडी. एंड द सेकेंड थिंग इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रूवल. कि जो मेकर एंड चेकर, क्योंकि एक उसमें क्या टाइम गैप है, कि अगर टाइम गैप विद इन 30 सेकेंड है, मीन्स कोई 50 करोड़ की ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट मेकर ने उसको अप्रूव कर दिया, देन चेक कर दिया, वो था विद इन 30 सेकेंड, देन यू शुड थिंक समथिंग फिशी इज देयर. तो यू हैव टू चेक द वेलोसिटी ऑफ अप्रूवल कि कितने सेकेंड के अंदर अप्रूव हो रहा है. देन थर्ड थिंग, मैनुअल एंट्री इन सीटीएस. क्योंकि आजकल जितने भी चेक्स क्लियर हो रहे हैं, इट्स थ्रू द सीटीएस सिस्टम, जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम है. मींस आपका चेक, क्योंकि क्या है आजकल मैनुअल तो कुछ है नहीं आपके, जो यू हैव इशूड सम चेक, तो चेक की स्कैन कॉपी विल बी देयर एंड यू हैव टू ऑथराइज दैट. तो नो मैनुअल एंट्री एंड देयर, एंड सीबीएस सिस्टम ऑटो रीड इट. तो यू हैव टू चेक फ्रॉम द वेयर देयर आर सम मैनुअल एंट्रीज देयर. अगर कुछ मैनुअल एंट्री हुई है, कि अगर ऑटोमेटिकली रीड नहीं किया उसने सीबीएस ने, देन यू शुड चेक दैट
detail very carefully. Then another one is duplicate sign in. उसमें क्या है कि आपका मेकर एंड द ऑथराइज आईडी आपको चेक करना है सेम आईपी एड्रेस से अगर वो लॉगिन हो रहा है, मीन्स मेरे ही सिस्टम से मेकर ने लॉगिन कर लिया और मेरे ही सिस्टम से आपके ऑथराइजेशन, देन इट मीन्स वन पर्सन इज देयर, क्योंकि you can't share your password with other, but yes, bank person can do, but you have to be careful as an auditor. If there are on one IP address, one is the maker and one is the authorization, then there can be some fishy. I'm not saying in all cases, but you should be careful as a auditor. Then another one is very important. जितने भी मेजर ट्रांजेक्शन्स है जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, यू हैव टू केयरफुली चेक लेट इवनिंग ऑथराइजेशन, कि 5 बजे के टाइम मीन्स आपके आफ्टर 5 PM जो ब्रांच प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप उसके बाद कुछ ऑथराइज कर दो, देन देयर कैन बी सम फिशिंग. So these are few things as an auditor, as an chartered accountant, you should check it. Now another thing, someone asked me कि सर प्राइवेट बैंक्स का ऑडिट क्यों नहीं होता? प्राइवेट बैंक्स का ऑडिट होता है, बट दे आर लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी और ऑडिटर से अकाउंट होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर. तो अभी जो आईडीएफसी बैंक्स के ऑडिटर हैं स्टैट्यूटरी, देयर आर ओनली 2 ऑडिटर्स. एक, यू कैन चेक द नेम, वन इज MM चितले या MP चितले एंड कंपनी. Another one is another auditors, I forget the name. 2 auditors are there, statutory auditors. And I just want to ask, मैंने गूगल किया MP चितले एंड कंपनी की, MM चितले या MP चितले जो भी कंपनी, उनकी मेरे को कहीं भी वेबसाइट नहीं मिली. हाँ, एक वेबसाइट मिली, मुकुंद P चितले या मुकुंद M चितले, and he was the past president of ICI. So my only concern to you people, you should check what's the connection between these two firms, whether it's by the same two person. Like मेरी फर्म कोई है, अगर मैं उसको लिखता हूँ विवेक खुराना एंड एसोसिएट्स, खुराना विवेक एंड एसोसिएट्स, देन देयर आर सम कंफ्यूजन कि माइट बी द सेम पर्सन आर देयर. तो दैट यू हैव टू चेक. एंड मैं पहले भी हमेशा कह रहा हूँ, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, यू चेक द डिटेल. उसके ऊपर ऑडिट भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे वीडियो के ऊपर विल आस्क द CSR टीम टू अपलोड दैट, और उसमें लिंक डाल देंगे. एंड आल्सो 25-26 का भी वेरी सुन विल अपलोड दैट. तो उसमें जो आपको मेजर ऑडिटर्स मिलेंगे, दे आर आइदर द पास्ट CCM or the current CCM or the past president, you will get that. Then where are the RBI? RBI said, yes, we are monitoring. There are no system collapse. We will check if there are some. Oh, एक ही इनकी lines होती है कि we are focusing on that. Our team are focusing on that. Even IDBI ने क्या किया? Suspend कर दिया, FIR lodge कर दी. Then committees are discussing. What about the public money? अभी तो चलो गवर्नमेंट का मनी है, बट गवर्नमेंट मनी भी तो आपकी है. Where is the public money? Who are securing the public money? Why these private banks are not auditing like the public sector banks? You know, IDFC बैंक कोई स्मॉल बैंक्स नहीं है. More than 1000 branches हैं, and only 2 auditors are there. How they do all the branches? वो सिर्फ लार्ज ब्रांचेस को चेक करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं. सिर्फ जस्ट वांट टू आस्क वेदर दे हैव विजिटेड, कभी विजिट भी किया है चंडीगढ़ ब्रांच में? 1000 ब्रांचेस में पूरे साल में विजिट नहीं होता, 365 डेज होते हैं. आप 2 ऑडिटर्स हैं, 730. तो और इनकी जो ब्रांचेस हैं, प्राइवेट बैंक्स की ब्रांचेस स्मॉल्स नहीं है, लार्ज बिजनेस दे आर डूइंग. अराउंड आई थिंक 40 million customers they have, IDFC banks. तो I just want to ask our ICI president, even will send the letter to them. मैं उनको लेटर भी लिखूंगा एक. इवन आई विल शो यू द फॉर्मेट, अगर मेरे पास अभी है नहीं मेरे ख्याल, तो विल सेंड. यहाँ पे मैं लिंक में डाल दूंगा कि व्हाई नॉट दीज प्राइवेट बैंक्स, इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, इनका ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट शुड बी सेम लाइक MEF थ्रू द ICI. ICI should approach to the RBI and also to the finance ministry,
because public monies are involved. Even now, not only public money, government money is also involved. So फर्स्ट, इतनी बड़ी ब्रांच थी उसका कंकरेंट ऑडिट क्यों नहीं हो रहा था? concurrent audit should also be there. As a chartered accountant, as a auditor, as a concurrent auditor, you check all the transactions. तो अगर कोई कंकरेंट हो रहा होता तो माइट भी ये आपका जो फ्रॉड है ये होता ही नहीं. एंड सेकेंड थिंग, why not bank branch statutory audit of these private banks? How it's possible? Only two firms can do the audit of these banks. So my request to all of you, please ask your CCM, mark letter to the ICI president, vice president, ki please represent us to the RBI and the finance ministry for branch statutory audit of these private banks, and also concurrent audit up to a limit for these uh, private banks branches. So this is regarding the जो आपने पूछा था IDFC बैंक फ्रॉड 590 करोड़ एट चंडीगढ़ ब्रांच. एंड नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज फ्रॉड के लिए भी दे पीपल आर वेरी वेरी, यू कैन से दैट, कैपेबल. मतलब हाउ दे डिड, यू नो, आई एम सरप्राइज. मीन्स आरबीआई की काफी रूल्स रेगुलेशन, ईडब्ल्यूएस, लोड्स एंड लोड्स ऑफ सर्कुलर नोटिफिकेशन है, एंड दे हैव bypassed all. So I think you got the answer. Uh, so if any query, you can ask. Yes, Stella. Very wonderfully explained, sir. Thanks a lot to from our side. Like you explained very easy way. Hopefully, the people who are watching us they understood very well. And if there will be any doubt, you can guys ask a question in our comment section. Definitely, we will reply you. So again, sir, thanks a lot to joining us and also giving your valuable time. So once again, my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me this opportunity. And regarding the 25-26, regarding the central statutory auditors, we'll upload new video and the name of the audit firms who have been approved by the RBI as the statutory audit of the private banks like IDFC, ICIC, IDFC. So we'll also upload very soon, because now it's the time for the bank branch statutory audit. आईसीआई ने अपनी लिस्ट फाइनलाइज कर दी है. विल सेंड इट टू द आरबीआई, देन आरबीआई विल फाइनलाइज एंड विल सेंड बैक टू द विल सेंड टू द बैंक्स, एंड देन दे विल अपॉइंट द न्यू और द एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स. सो वी विल डू इट. So my request to only to the CS sir, give me more and more time so then work, do and record some more videos. So thank you very much. Bye bye. Take care.